हम लोग के 2 flats in Jaipur में, and we are staying in a rented house which is a 3 BHK one. Are there any plans of buying one? Yes, we wanted to buy, but we wanted to buy a big one. I like the fact that you are fully prepared. बहुत बढ़िया. This will be my 4-step plan for you. Okay. It is definitely going to be a dream come true for us. Trust me, Ankur. इस हफ्ते के मनी मैटर्स में हमारे साथ है एकांश ऑल द वे फ्रॉम जयपुर बट राइट नाउ इन अ डिफरेंट सिटी. हाउ आर यू एकांश? I'm doing good, Ankur. Thank you very much. How are you doing? वेरी वेल, थैंक यू सो मच. आपकी आवाज एकदम भारी भरकम विद अ रियली नाइस डीप टोन टू इट. हैव यू ever been an RJ or something? Oh no, I wanted to, but by the way, I do have a very small YouTube channel, so maybe because of that. अरे वाह. शायद मैं Oh, थोड़ा बहुत बोल पाता हूँ. It's a very pretty new nice. channel. Lovely, lovely. We will talk about that as well. बहुत बढ़िया. So कहाँ से हैं आप एकांश? I know that you mentioned you're originally from Jaipur. Where are you currently? So, Ankur, I'm from multiple places, and when I say Okay. multiple places, means I was born in Jaipur but brought up in Faridabad. I अच्छा. have lived in Bangalore also for about 7 years. And by the way, I work in an IT company, so I'm an IT professional. Lovely. And recently, just before COVID, we moved to Jaipur. We means my parents, my wife, my daughter. We moved to Jaipur, but abhi hybrid ki वजह से I have to travel to Gurgaon every week for 3 days uh, um, to तो my आप bread and butter. तो गुड़गांव जयपुर आप करते हैं हर हफ्ते? हाँ जी. Oh, does it get hectic कि चल जाता है? Kind of, but अभी thanks to the new Mumbai Expressway जो अभी जयपुर से हाँ. गुड़गांव बना है, so because of that, ठीक है, manage हो जाता है, and have to do it. Right, exactly. Yeah, that's also true. You mentioned कि आपके family में आपके पिताजी, माताजी and wife and daughter. Yes, so my family is consists of my parents, of course, my father, my mother, my wife, my 8.5 years old daughter, Lovely. and my younger brother, his wife, his 2 daughters. So we all stay together. When I say together, we stay in a same society but in 3 different flats. अरे वाह, very nice. So Yeah. close and yet independent. बहुत बढ़िया Absolutely. setup है. Great. And आपने बताया कि आप IT प्रोफेशनल हैं. When you filled up this form, एकांश, and आप मनी मैटर्स पे आना चाहते थे, what was the main objective? आप क्या इससे हासिल करना चाहते हैं? कोई knowledge या कोई मदद या anything? I'd love to know. Yes, Ankur. So my expectation from this session would be to actually understand my finances. Okay. I know मैंने अपने हिसाब से कुछ चीजें plan की थी initially. Maybe the traditional investment plans, जो कि एक I think गलत myth था मेरे लिए. For example, investing in LICs and everything. So I think वो सारा mess up हो गया है because of listening to the experts like you. I think that was not the right decision to make. So abhi, whatever investments I have made, I wanted to understand, am I going in the right direction or not? Of course, I plan to retire, say after 10 years or 15 years. So do I have the enough bank balance to say to get retired? बिल्कुल. So बस यही बिल्कुल. मेरे को Okay. आपकी help चाहिए. Yeah. Wonderful. बहुत clean and बहुत clear. आपकी उम्र क्या है अभी एकांश? I'm 42. Okay, wonderful. And if you don't mind, आपकी wife की and parents की age? My wife is 43 years. Okay. My father is 72 and my mother is 68. Perfect. Lovely. And one question before we proceed, जो आपके specific finances हैं कि आपके parents की financial responsibility क्या वो खुद लेते हैं, or is it shared between you and your brother, or you bear it? How does it work? So क्या अंकुर, इसके पीछे एक छोटी सी story है. Please. So we used to take care of them, although we were financially independent. So when I say we, I would like to mention my parents' name. They were financially independent about 10 years back, but due to some financial crunches, वो इतना अच्छा नहीं कर पा रहे थे. So my younger brother and I was taking care of them. But recently, thankfully, by the grace of God,
हम लोगों ने कुछ ऐसे डिसीजंस लिए फैमिली के अंदर दैट नाउ दे आर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट फॉर लास्ट आई वुड से 8 or 9 months. लवली, 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 दैट्स गुड, वेरी नाइस। क्या इसका मतलब ये होगा एकांश की देयर फ्यूचर फाइनेंसेस, health insurance, life insurance, and of course their day-to-day living, क्योंकि I'm assuming they're both retired, so everything is now secure, and उसके लिए आपको specifically planning करने की जरूरत नहीं है, and the planning is largely limited to your family and yourself. Correct. ठीक है, perfect. Okay, that clarity really helps. Thank you so much. Okay, तो इसी के साथ फिर आगे बढ़ते हैं, and I'm very excited to speak to you, एकांश। बहुत जब से मिनी मेंटर्स शुरू हुआ है, बहुत लोग हमारी उम्र में, क्योंकि मैं भी 44 का हूँ, सो वी आर वेरी सिमिलर एज्ड, बहुत लोगों ने लिखा है कि प्लीज आप इस उम्र वालों के लिए बनाइए, क्योंकि हम क्लोज टू रिटायरमेंट हैं, एंड येट वी हैव अ फैमिली, वी हैव एन इनकम, बट हमें नहीं पता है कि कैसा। सो आई एम रियली होपिंग दैट इस कॉन्वर्सेशन के थ्रू वी विल गेट क्लैरिटी फॉर ऑल ऑफ देम, एंड ऑफ कोर्स फॉर यू। सो थैंक यू फॉर बीइंग द एग्जाम्पल ऑफ व्हाट वी कुड एमुलेट। लेट्स गो अहेड। तो हम essentially जैसे आपने देखा होगा मनी मैटर्स में इनकम पे पहले फोकस करेंगे, एंड देन वी विल फोकस ऑन एक्सपेंसेस साइड, एंड विल सी व्हाट द इन्वेस्टमेंट्स आर, या अगर नहीं हो रही हैं तो कैसे हो सकती हैं टू गेट टू अ फेवरेबल आउटकम। लेट्स स्टार्ट विद इनकम। Sure. परफेक्ट। तो आपकी इन हैंड आफ्टर ऑल डिडक्शंस मंथली सैलरी कितनी है एकांश? हाँ जी, so after deducting all the taxes, PF, AF जो भी कटता है उसके बाद I draw 1,15,397 to be precise. Lovely. I like the fact that you are fully prepared. बहुत बढ़िया. That is wonderful. And क्या इसमें are you aware कि कितना PF deduction होता है? Yes, my monthly PF deduction is 8,700, but I recently enrolled for voluntary PF. एक कुछ amount है वो भी कर सकते हैं. Yes. So Yeah. I did that, and the amount is 7,250. Okay, 7,250, and this is in addition to the 8,700, correct? Yes. Okay, perfect. And so that means your total PF every month will be 8,700 into 2, क्योंकि company contribution भी आएगा. Right. Plus the 7,250, which is around 24,650, which is a very, very healthy amount. And I love that. बहुत बढ़िया. Great. Any other income sources at your level right now, Ekansh? I had opted for NPS as well about, I think, 5 or 6 years back. Okay. So उसका monthly 5,000 deduct होता है salary में से. All right. तो वो हम, and that is from the 1,15,000. उसके बाद वो 5,000 deduct होता है. ये सब डिडक्ट होने के बाद my in hand is 1,15,397. Okay. ठीक. Yeah. Perfect. And so NPS is 5,000. Wonderful. Lovely. Is your wife working right now, Ekansh? Yes, she is. Lovely. And would you mind sharing what is her monthly salary? Sure. So she draws 1,70,110 per month. Right. After all the taxes and everything. Lovely. Any idea उनका कितना PF deduct होता होगा? हाँ जी, per month it is 22,673. Perfect. Lovely. And any other? हाँ जी, उनका भी NPS ओपन कराया था, but I think वो 5-6 महीने पहले हुआ था, so again 5,000 per month. Great. So as a family, आपका inflow is approximately 2,85,000, and आपका PF and NPS contribution is nearly 80,000, 4 rupees short of 80,000, which is very nice. By the way, मैं Excel sheet पे काम कर रहा हूँ एकांश, and after this call ये Excel sheet मैं आपके साथ share करूँगा. Sure. This will be, of course, also shown on the screen. Lovely. I'm also looking at my Excel sheet, by the way, so just in case if you feel कि मैं कहीं और देख रहा हूँ, no, I'm looking at myself. No, that's perfectly fine. वो दिख ही रहा है, आप जिस precision से numbers share कर रहे हैं कि आप कहीं तो देख के कर ही रहे होंगे, and I love that. बहुत बढ़िया. The funniest conversations are जब लोग बोलते हैं कि in hand ना हमारा कुछ 30 से 32 हज़ार रुपए आता है.
इतना तो पता होना चाहिए ना कि एग्जैक्टली कितना आ रहा है। चलिए, जितना खर्च हो रहा है वो शायद एक रेंज हो सकती है, पर आना अगर आपकी एक सैलरी है वो तो पता होना चाहिए। बट सो आई एम ऑलवेज वेरी हैप्पी जब बहुत प्रिसिशन से लोग शेयर करते हैं। थैंक यू फॉर दैट। ओके, खर्चे पे शुरू करते हैं फिर। हाँ जी बिल्कुल। आपका एक यूनिक सेटअप भी है बिकॉज यू गो टू गुड़गांव, सो आप शायद वहां भी रहते होंगे, फिर ऑफकोर्स आपका जयपुर में घर है एंड सो ऑन। सो आई लव टू अंडरस्टैंड व्हाट द एक्सपेंसेस आर। तो शुरू करते हैं। मोटा मोटा आपके सबसे बड़े बड़े एक्सपेंसेस क्या क्या हैं एकांश? हम लोग के 2 फ्लैट्स हैं जयपुर में। सो ओके, एक की ईएमआई जाती है, शैल आई स्टार्ट विद ईएमआई और यस, या यू कैन ओके स्टार्ट विद दैट। ओके। सो फर्स्ट वन इज 17,500 पर मंथ। ठीक है, और हमने लोन लिया था 19 lakhs का, ओके, and the overall duration was 20 years, ओके, and it has been I think 5 years passed by. ठीक है, ओके, And the second one is the EMI that we pay is about 32,000 rupees a month, ओके, ठीक है, and the overall loan amount was again around 32 lakhs something, ओके, ठीक है, and it has been I think 2 years since we bought this flat. So ग्रेट। तो ये आपके दो बड़े ईएमआई के खर्चे हो गए। ऑलराइट, व्हाट एल्स? हाँ जी, I wanted to add one more thing into it. So प्लीज, इसमें एक फ्लैट में my parents have occupied. We wanted them श्योर, to live in their own flat, so एक उनको दे रखा है। एक में my brother is staying, ओके, and we are staying in a rented house which is a 3 BHK one, because initially we ओके, were in 2 BHK. We thought अभी छोटा है ये, या, so we wanted to live in a 3 BHK. So instead of buying it, we are renting it in Jaipur, and the rent we are ऑलराइट, paying is 18,700 per month. perfect, wonderful, wonderful. If you don't mind, which of the two flats are for parents and for the brother? So 17,500 per month वाला जो EMI है, Uh-huh. this is for my parents. Okay. The second one Perfect. is And the for second one is for brothers. yeah. And क्योंकि ये सारे घर सेम सोसाइटी में, आई एम अज्यूमिंग कि इनकी सेम वैल्यू भी होगी। वुड यू हैव अ आइडिया ऑफ अप्रोक्सीमेटली हाउ मच इज द वैल्यू ऑफ दीज फ्लैट्स? हाँ 1 जी। 2 3। So first one, that's a 2 BHK one. So its key value is around 55 lakh, ओके, and second one is around I would say 55 both. ओके, Yeah. ठीक है। सो सॉरी, आई एम अ लिटिल कंफ्यूज्ड। जो आपने पहला घर का लोन लिया था, द लोन दैट यू टेकन वाज 90 और 19 19? 19. Oh, अच्छा, I'm so sorry. I heard 90. Now it makes sense. Perfect. ठीक है, Yeah. हाँ. Now the EMI also makes sense. Okay. Lovely. So let's assume कि 55 lakhs each is the घर की वैल्यू, एंड आपका 3 BHK है, so I'm assuming उसकी वैल्यू थोड़ी ज्यादा होगी। But that's a rented house. हाँ. Are there any plans of buying one? Uh, um, yes, we wanted to buy, but we wanted to buy a big one so that we can accommodate our parents as well, since they're growing old. But Nice. अभी वो planning चली रही है. I don't know ठीक है, कितना हो पाएगा. परफेक्ट। ठीक है, इसी में देखते हैं अगर वो प्लानिंग हो पाएगी। लवली, Sure. बहुत बढ़िया। और ठीक है, तो ये आपके दो फ्लैट के ईएमआई और घर का रेंट हो गया। व्हाट एल्स? We own 2 cars as well. ओके, So the EMI of first car is about 17,600, ओके, और total loan जो हमने लिया था around 11,30,000, ठीक है, and that was for 7 years. And ओके, अभी अगस्त में 2 साल हो जाएंगे इसको. ओके, And ठीक है, the second car is the EMI goes is around 8,500, ठीक है, and again we took it 2 years back, and हम्म, the overall the loan amount is let me see, I have that exact value. I think it हाँ, was sure, 7 lakhs. ओके, ओके, लवली, परफेक्ट। व्हाट एल्स? So we spend about 2,70,000 every year on our daughter's education. That it परफेक्ट, includes her transport, school fee, and the coaching that she's taking. परफेक्ट, लवली, And ठीक है, okay, we do have term insurance and medical, the health insurance as well. या, So I'll talk about my term insurance. So मैंने term insurance लिया हुआ है 1 CR का, ओके, and I took it in April 2017.
Okay. And the overall policy term is 40 years, and the premium I'm paying is about 19,800. Now, term insurance for my wife. So we have got two term insurance for my wife. So एक Okay. हमने पहले लिया था. So the first one is again worth 1 CR, Okay. and we took it in 2016, Mhm. and the premium goes is 10,700 annually, Okay. Okay. and the policy term is 40 years. Mhm. और जैसे से उनकी सैलरी इंक्रीज हुई, so I thought she should take more. We should increase this amount. So Yeah. we recently took another 1 CR of term insurance for her. Got it. और उसमें एक एक्चुअली एक स्कीम थी, इफ यू टेक इट फॉर 10 years, so कुछ प्रीमियम थोड़ा सा ज्यादा था, बट वी हैव टू पे ओनली फॉर 10 years, so we chose Correct. that one. So वो Okay. है, मैं आपको बताया था. So premium is 4,200 rupees per month, Okay. and we have to pay it for 10 years, 10 years. and policy term is 35 years. Got it. So the overall coverage that we have taken is, so कोई plan था 10 lakh plus 90 lakh ऊपर से add-on types, so it is like 1 crore, and the premium we pay is 65,000 for 3 years. And who all are included in this term insurance? We three, me, Okay. my wife, and my daughter. Sure. We do have a PPF contribution as well. I don't know if I have to tell you now or later. Oh, that we'll cover in the investments that. Acha, okay. So I think I've covered term insurance, medical insurance, home loans, rent, car loan. That is it as So of now. okay, day to day spends cover करते हैं. So give me approximate food grocery पे कितना खर्चा होता है महीने का? I would say around 30,000. Okay, ठीक है. Perfect. Acha. And travel? Yes, travel is something. If I talk about my office travel to Gurgaon from Yeah. Jaipur, I think month May it is around 25 to 30,000. Easily. Yeah. बिल्कुल ठीक है. And utilities, बिजली, पानी, phone So we include कर subscription, देना, any other subscription? 30,000 I've included everything. अच्छा, okay, all right. So travel. I think we should take it to 40,000, because you're right. I did not include the maintenance part of the flats that we own. Flats. Okay. And usually, let's say for shopping, entertainment, eating out, etc., on an average a month? On an average, I would say around 7 to 8,000. Perfect. So I'm just adding this up right now. Of course, it काफी approximations के साथ है, but whatever it is. So this is coming to approximately 2,03,000. All right. Now let's go to investments. तो कुछ investments तो आपकी deduction से पहले ही हो जाती, sorry, deductions में included है. तो आपका PF NPS आपने cover कर लिया था. Let's talk about anything else that you spend from the income that you and your wife generate. Okay. We contribute towards PPF as well. Okay. And I don't know, when did we start? I think we started it about 6 years back. ठीक है. So how much do you contribute every year or every month towards that? So I contribute 12,500 every month, and my wife also contributes 12,500 every month. ठीक है. All right. Perfect. So 25,000 for that. And what else? Okay, we have got one Sukanya Samriddhi account going on for our daughter. I opened it in 2016 August. Okay. And again, maximum limit 1,50,000 every year. ठीक है. But I wanted to add one thing. ये सब हम कर रहे थे आज से कुछ 7-8 महीने पहले. उसके बाद हमको किसी ने बोला कि SIP स्टार्ट करो. That I'll tell you later. तो हमने वो अमाउंट थोड़ा सा अब रिड्यूस कर दिया. But until then we were doing that. ठीक है. All right. Perfect. और बताइए. Then we have got 3 SIPs. And shall I tell you the overall amount or the breakup of those? नहीं, अलग-अलग बताइए तो I'll get a good sense. So I contribute 20,000 per month towards it. And I contribute for my daughter as well, which is again 20,000. Perfect. My wife has a separate SIP account, so she contributes again 20,000. So overall 60. Perfect. And do you know कि ये SIPs कौन से म्यूचुअल फंड्स में है? I have no idea about it.
Okay, nobody. Is somebody managing all of this for you, or you do it yourself? Yes, one of my friends. Yes, अच्छा, although he ठीक है. did explain it to me about 8 months Okay. back, but अभी मेरे को याद नहीं है. नहीं, no problem at all. ठीक है. Perfect. एक और प्लान मैंने ले रखा है. Sorry, हाँ जी. that is called as HDFC Click to Wealth. Okay. Again, I took it in January 22, Mhm. and I pay 5,000 rupees every month as Mhm. the premium, and it is to be paid for 10 years, and the policy term is 15 years. And what will you get after 15 years? I don't know. I forgot. Like, you're not the only one. You're like I know. ये ऐसा ही है. मतलब हमने ले लिया, बस हमने ले लिया. अब कुछ ले 15 लिया. साल बाद कुछ होगा. Exactly. No, that's perfectly fine. I totally understand. ठीक है. Perfect. Okay. और कुछ? अंकुर, एक मेरी LIC चल रही है जो मेरे पेरेंट्स से खुलवाई थी. आई थिंक इट इज गेटिंग मैच्योर्ड इन आफ्टर 2 years when I'll be 44. तो उसका अमाउंट कुछ होगा अराउंड 16 to 17 lakh. Good. That is Anything else that I need to know? No, I think I've covered everything. Wonderful. Perfect. Great. So let's start this journey. Thank you so much. बहुत सारा डेटा मिल चुका है, बहुत अच्छे से कवर भी हो गया है, and there'll be 3 specific goals that I will work towards. One is daughter's education at 18, so in another 10 years, because she's 8.5. Second will be your retirement, both your wife and you. So give or take, because you're almost the same age, we'll assume 17 years, or let's say assume 15 years. So retirement in 15 years. And then third one, which may or may not happen, is a home purchase for you. Considering that there is already a home that is for your parents and for your brother, and जैसे आपने बताया, आप एक बड़े घर में अगर हो सके मूव करना चाहेंगे, which could also then accommodate your parents and your family. Just on that, मुझे ये पूछना है कि अगर आप एक ऐसा घर खरीदना चाहें and खरीद सके, उसकी approximate value कितनी होगी आज की डेट में, एकांश? I would say around 1.5 CR. Okay, ठीक है. तो 1.5 CR वो है. डॉटर की एजुकेशन के लिए, is it reasonable to say 1 CR when she turns 18? Could be. Again, me and my wife are very practical. If our daughter has that capability, why not to send her to a very good university or college? But if she's normal, then I think there's no need to send anywhere else. That is what we think. Okay. That's perfectly fine. Absolutely. Yeah. I think that's only reasonable. So it's safe to assume, चलिए कोशिश करते हैं 1 CR अगर ये हो पाएगा, and then retirement in 15 years we'll look at what is the max that we could get to, but 3 to 5 CR is what I am targeting. All of this is at current value, right? So मतलब आज की डेट का 1 crore in 10 years for your daughter's education may be a different amount, and आज की डेट का 3 to 5 crores could be a different amount. We'll get to that. Okay. Let us start. My first reaction, Ekansh, is you're in many ways a very classic example of एक ऐसा इंसान जो बहुत अच्छे से अपने goals achieve कर सकता है, should they start working in the right direction, क्योंकि you don't have to take a lot of risk to get there. So here's what. Sorry. हाँ जी, please. Sorry to interrupt you. I think I should have told you one more thing. I do have one shop as well in a mall. Okay. Which I purchased just pre-COVID. COVID के 1 साल पहले मैंने लिया था. So its value is around 30 lakhs. Okay. उसपे thankfully there is no loan. I mean there was a loan, but I cleared it off because the interest rate was the highest on that. So I think I should mention that. Lovely. तो मैं अभी assets पे आ ही रहा था. तो there is a 30 lakh shop that you have. There are of course 2 homes that are there. While you may not want to ever sell them, but certainly they are part of the asset value, and we'll come to that. कुछ approximate मुझे idea दीजिए कि including you and your wife, आपके बैंक में अभी कितने पैसे होंगे? जो सबका आंसर होता है अंकुर वही मेरा है. I hope you get it. Okay. कोई ballpark, कुछ मोटा-मोटा, कुछ हजार, कुछ लाख, कुछ multiple 10 I lakh. think around 45-50,000. Okay.
ठीक है, perfect, all right, ठीक है। आपने जब 45-50 बोलना शुरू किया तो बोला कहीं लाख ना बोल दे ये। I wish होते। नहीं 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 नहीं, होंगे, पक्का होंगे, बोला बोले, पर यही है कि वो बैंक में नहीं होने चाहिए क्योंकि बैंक में इतने Yeah, पैसे तो जल जाएंगे। ओके, right. ठीक है। एंड इन केस यू नो दिस, क्या आपको अभी पता होगा कि आपका टोटल पीएफ वैल्यू बिटवीन यू एंड योर वाइफ कितना है? अभी अच्छा, तक का टोटल पीएफ वैल्यू। sure. So PF में my statement says I have a corpus of about 10 lakh 44,000 ठीक है, और 5 का around 21 lakh. ग्रेट। जो ये शॉप है आपके मॉल में, उससे कोई रेंटल इनकम आता है? रेंटल इनकम अभी तो स्टार्ट नहीं हुआ, बट कुछ लोगों ने मुझे रीच आउट किया रेंट करने के लिए। रेंट्स आर वेरी लेस, सो मुझे बिल्कुल रॉ है, उसको पूरा मैं बनवाऊंगा, सब बनाना करूंगा। सो आई पड़ेगा, विल हैव टू हाँ। स्पेंड 1.5 lakh. सो मी एंड माय फादर हैड अ कॉन्वर्सेशन, वी थॉट कि नहीं यार, इसको सेल ही करते हैं। अननेसेसरी 8-10 हज़ार रुपए के पीछे इतना खर्चा करना ठीक नहीं है। I like 100%, and I'll make that part of your proposal. Okay, ठीक है। So let's start. So my first observation, Ekansh, is at the age of 42, your wife 43, you should be contributing anywhere between 35 to 40% of your income into what are called safe assets. If you look at how much you are contributing as a family, about 28% of your income is already before deduction contributed into your PF and your NPS. तो जो 80,000 रुपए अप्रोक्सीमेटली आप करते हैं, वो 28% ऑलरेडी उसको कवर कर देता है फ्रॉम द सैलरी दैट यू गेट। इन एडिशन टू दैट, आप 25,000 रुपए महीना पीपीएफ कर रहे हैं एंड 12,500 रुपए आपने अपनी डॉटर के लिए सुकन्या भी लिया हुआ है, पर लेट्स से इफ यू टेक द 25,000 रुपीज इटसेल्फ, so that is another 9% or so. So you're already about 37%. And plus आपका एक LIC का प्रीमियम मैच्योर होने वाला है 2 साल में, जिसमें आपको कुछ 16-17 लाख रुपए मिलेंगे। तो my first reaction is that do not, and when I say do not, you don't need to, not because you shouldn't, you don't need to invest any further in safe assets. And I will give you a sense of कि ये कितना वैल्यू बनेगा in the next 15 years जब हमारे पास ये आएगा। Second, specifically for your daughter, जो LIC आपकी 2 साल में मैच्योर होगी, which will be at 16-17 odd lakhs, प्लस जो आपने सुकन्या शुरू किया था 2016 में उनके लिए, जहां आप 12,500 डालते हैं, my suggestion there is, because you're looking at a 10-year period, which is a fairly long duration, instead of going for something as safe as Sukanya, जो आपको मेरे हिसाब से करने की जरूरत नहीं है, you should be willing to take slight more risk and invest for that 10-year period. So what I would do instead is, I would start a SIP. You already have one for 20,000 for your daughter. नहीं, this is 20,000 is inclusive of. Oh, acha, I'm so sorry. I'm so sorry. Okay. Inclusive of Sukanya. Okay, perfect. ठीक है. That is perfectly fine. And that is also in order. तो 20,000 रुपए का अगर प्लान SIP का करना होगा, again 3 SIPs. What I would do is 10K की एक SIP, and ये अब अपने दोस्त पे आप नहीं रखेंगे. You will take ownership of that, huh? Because that's the promise that I need from you. So you don't have to do it yourself, but you will have to tell your friend, whoever is managing your money, कि मुझे इन 3 SIPs में सबसे बेस्ट म्यूचुअल फंड बता दो, and you will invest there, and I know what to do. तो 10,000 रुपए की SIP आप शुरू करेंगे, and you will put it in the Nifty 50 mutual fund. 6K की SIP I would put in a mid cap mutual fund, and then 4K in what will be a small cap mutual fund. In addition to that, जो आप का 16-17 लाख रुपए 2 साल के बाद मैच्योरिटी आएगी, उस अमाउंट को भी आपको लमसम के रूप में म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, अगेन फॉर योर डॉटर. So my suggestion there is, of let's say you get 16 lakhs, 8 lakhs ka in Nifty 50, 5L lump sum for mid cap, 3L lump sum for small cap. And then number 3 will be, you should, and this is my opinion, please take it for what it is worth, आप लोग अभी
एक 30 लाख रुपए की दुकान पे बैठे हैं एज एन एसेट, एंड आप लोग अभी एक 55 लाख रुपए के घर पे बैठे हैं एज एन एसेट, विच हैज अ लोन रनिंग ऑफ अप्रोक्सीमेटली 19 lakhs when you're taken. उसके 5 साल हो चुके हैं, सो गिव और टेक इट वुड बी समवेयर अराउंड 16 या 17 lakhs अभी भी उसके बचे होंगे. And that means you're sitting at approximately 69 lakhs of net asset value only for the shop and your parents' current house. Okay. In addition to that, आप 18,700 रुपए रेंट देते हैं, प्लस 17,500 रुपए पेरेंट्स के घर का रेंट देते हैं. सो द टोटल अमाउंट दैट यू पे इज 36,000 rupees. Now, if you were to combine this, so 36,200 means that you can approximately, keeping the same rent and EMI amount, take a loan of about 35 to 40 lakh rupees. अगर आप 25 साल के लोन कर देंगे, then you'll be able to take a slightly higher loan, let's say around 40 lakhs. तो technically अगर आप चाहें, you can buy a house give or take between 1 to 1.2 CR by doing this math right now. Okay. 1.2 CR का अगर आप घर लेते हैं, which I understand is lesser than the 1.5 CR का घर जो आपने बताया, what will happen? आपका जो पेरेंट का अभी घर है वो आप बेचेंगे, आप अपनी शॉप बेचेंगे, Yes. उनका जो EMI एंड रेंट है वो बचाएंगे, एंड यू विल बाय अ बिगर हाउस व्हिच विल take care of your parents and your family as a whole, keeping the expense exactly the same. Okay. So my third recommendation, sell the shop and parents house, take a 40L loan which will ensure कि आपकी EMI is the same as the EMI of their house and your rent right now, and buy a 1.2 CR house for your parents and yourself. In addition to that, आप अभी 2 SIPs चला रहे हैं, which is 20,000 rupees from your end, 20,000 rupees from your wife end. I don't know वो SIPs किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड है, बट इफ आई वर टू अगेन एडवाइस यू देयर, तो जो 40,000 रुपये का SIP है, 40K SIP, उसका स्प्लिट, my recommendation will be 20K Nifty 50, 10K in mid cap and 10K in small cap. बहुत सारे म्यूचुअल फंड लेने की जरूरत नहीं है, ये 3 म्यूचुअल फंड में ही आप बहुत अच्छे से रिटर्न कमा सकते हैं. एंड नाउ लेट्स गो इनटू व्हाट कुड बी द scenarios. We will do a 10-year and a 15-year scenario for your daughter, because it may not be that she needs it at 18 itself. She may need it at say 23 or whatever the case may be. Yeah. So if you go with this, you will have at the end of 10 years for your daughter approximately 1 crore 14 lakh rupees. Okay. This should be in a reasonably good spot for her. If you wish to extend this, and just going to give you numbers कि अगर आप सिर्फ 5 साल से extend कर देंगे, so do the same math for say 15 years. I'm just very quickly going to do that. So वो 1 करोड़ 15 लाख रुपए 2 करोड़ 45 लाख रुपए हो जाएंगे. Wow. It will double with just 5 more years. So instead of thinking कि आपकी बेटी को 18 साल पे 1.25 करोड़ मोटा मोटा मिलेंगे, think of कि उनको 23 साल में 2.5 करोड़ रुपए मिल सकते हैं. And of course, anywhere in between will be the number. It's absolutely your call, but I would 100% secure her future by putting in these SIPs and putting in the lump sum जो आपको maturity पे मिलता है. Okay. Then let's come to the both of you. And इसके लिए I'm assuming 15 साल का investment and 20 साल का investment. 15 साल will make you around 57, your wife 58, and 20 will be same around 62 and 63. So between the two is where you will settle. इसमें what I'm going to do is, assuming that both you and your wife will continue to increase your salary as well, I will use a step up SIP. Step up SIP मतलब हर साल आप अपनी SIP को एक amount से बढ़ाएंगे. My recommendation, all SIPs that you're going for, एकांश, आप उनको 5% minimum step up पे तो डालिए ही डालिए. Okay. तो जो आपका 20,000 रुपए की आज की कोई SIP चल रही होगी, अगले साल वो 21,000 रुपए की हो जाएगी, एंड अगले साल उसी से 5% और 5% और 5% और,
and continue with that. So if you were to do a step up SIP of 20,000 rupees, 5% step up, so 5% का step up, 12% which is a nifty rate of return, and do it for 15. I'm not going to tell you the numbers, I'm just going to write these numbers down because I want you to be pleasantly surprised by them. तो एकांश, 40,000 रुपए की SIP, 20,000 रुपए निफ्टी 50, 10,000 रुपए मिड कैप, 10,000 रुपए स्मॉल कैप, 5% का सालाना स्टेप अप, 15 साल के लिए और 20 साल के लिए, प्लस आपका जो प्रोविडेंट फंड है 31 लाख रुपए ऑलरेडी जमा है, एंड आप हर महीने 50,000 रुपए बिटवीन योर वाइफ एंड आई कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. दिस नंबर इन 15 years, assuming the average rate of return, is going to give you a certain number. क्या लगता है आपको वो नंबर क्या है approximately? 4-4.5 करोड़ के आसपास. 6.43 crores. वाह, ओके. यही चीज 20 साल तक अगर आप हो जाए, एंड 20 साल में कुछ बदलाव होगा. नंबर एक, स्टेप अप SIP तो चलती रहेगी, लेकिन जो आपका प्रोविडेंट फंड है वो तो रुक जाएगा बिकॉज यू हैव रिटायर्ड. तो प्रोविडेंट फंड को आप उठा के एक FD डाल देंगे 6% की 5 साल के लिए. ठीक है. अगर आप वो करते हैं तब टोटल 20 साल के अंदर आपके पास कितना पैसा होगा? अराउंड 8.5. 12 करोड़ रुपए. ओह. 11.94 टू बी प्रिसाइज. अब ऑफ कोर्स इतनी प्रिसिशन से नहीं होगा, बट ऑफ कोर्स दिस, while you have your daughter between 1 to 2.5 crores for herself, एक घर जो आप अपने लिए सेम खर्चे पे खरीद चुके हैं if you choose to buy something within 1.2 crores, and आपका छोटे भाई का घर जो कि लोन पे ऑफ हो चुका होगा because it's already accounted for in your expenses. And I can't think of something as reasonable as this while taking care of everything else that you are doing. This will be my 4-step plan for you. Okay. It is definitely going to be a dream come true for us. Trust me, Ankur. मैंने ये फिगर and I कभी नहीं really सोची थी. Yeah. You can reasonably get there. I think you've played it very well so far. And यही है वो ना, कंपाउंडिंग हमें एहसास होता नहीं है कितना स्ट्रॉन्ग एंड कितना पावरफुल है, बट द ओनली थिंग दैट इट रिक्वायर्स इज डिसिप्लिन. मुझे ऐसा लगता है कि आप में वो है, आपकी वाइफ में वो है, एंड बाय दैट मेजर आई फील वेरी कॉन्फिडेंट दैट यू कैन गेट क्लोज टू दिस नंबर, इफ नॉट अबव दिस नंबर. Sure. लव इट. एनी क्वेश्चंस फॉर मी, एनीथिंग एल्स? ये शीट में आपके साथ अभी इस कॉल के बाद ही शेयर करूंगा, पर अगर कुछ भी और हो तो प्लीज बताइए. No, I think that's about it. In fact, हमने शॉप सेल के लिए लगा भी दी है, बहुत टाइम से मैं लगा रखी है for last 5-6 months. In fact, frankly, the value is much more than 30 lakhs. But क्योंकि वो एक कमर्शियल है, जयपुर में इतना कमर्शियल की रिटर्न है नहीं, so I was taking a the minimum amount of it कि 30 तो चलो मिल ही जाएंगे, इतना मिल गया तो अपना काम बन जाएगा वैसे टाइप्स. इससे मैंने आपको 30 ही बताया. नहीं, बहुत बढ़िया. अगर उससे ज्यादा मिल सकता है तो फिर तो 100% आई वुड रेकमेंड कि उसको और अपने पेरेंट्स के घर को बेच के एक बड़ा घर लीजिए. इट विल बी अ रियली गुड इन्वेस्टमेंट टू मेक फॉर द एंटायर फैमिली. एंड आपकी इस उम्र में आई फील यू एब्सोल्युटली डिजर्व अ स्टेडी परमानेंट होम फॉर योरसेल्फ, सो आई वुड हाईली रेकमेंड दैट. Sure. Yeah, perfect. Awesome. Lovely talking to you, Ekansh. Thank you so much for sparing time, and thank you for being so precise with the numbers. बहुत clarity मिल जाती है उससे, and I wish your entire family all the best. Thank you, Ankur. Wish you the same. मेरी नई किताब मेक एपिक मनी 1 महीने के अंदर ही 1 लाख कॉपीज बेचकर हिंदुस्तान की बेस्ट सेलर बन चुकी है. आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं Amazon. इसी के साथ मेरी पहली 2 किताबें गेट एपिक शिट डन एंड डू एपिक शिट भी बेस्ट सेलर्स हैं, Amazon पे अवेलेबल हैं. ऑडियो बुक, हिंदी फॉर्मेट एंड इंग्लिश फॉर्मेट. ये 3 किताबें आपकी रीडिंग जर्नी को एक आदत में बनाने की